जय जगन्नाथ। वेलकम टू प्रभात फिजिक्स 12th class physics chapter 3 current electricity, the combination of cell with difference EMF and different internal resistance. Okay, so now it's combination of cell in series. Combination of cell in series. Two cell having EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 connected in series and supplied to load resistance. Okay, so in series combination the current is same, current same rate and the potential difference are different. Potential different are different. Okay, ठीक है. तो suppose VA, VB and VC. VA potential at A, VB potential at B, VC potential at C. Okay. तो potential का बेटा फॉर्मूला E क्या है? E है V प्लस IR. E क्या है? V क्या है? V इक्वल टू E माइनस IR. नेगेटिव रू पॉजिटिव की करंट गले एमती आसीबो जो पॉजिटिव रू नेगेटिव की जीवो प्लस हम पढ़े आगु न्यूमेरिकल कल कराबो. इफ करंट पॉजिटिव रू नेगेटिव की जाए सेल उल्टा लगी जाए सेठी E प्लस IR आसीबो से जाके कंटेंट जाएंगे. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एट A is A, BA, this is VB, this is VC. तो बेसिक फार्मूला इज पोटेंशियल का क्या है? E minus IR. Okay. So now PD between A and B. Potential difference between A and B क्या है भाई? ना VAB. हेलो VAB क्या है? VA minus BB. तो VA क्या है? E1 potential E1 and V2 A एंड्रे potential कितना होची minus E1 minus I R1 VAB. This is the first concept. Potential difference between A and B is E1. Potential A एंड्रे E1 होची इथे drop जो करছে potential ता केते I R1. Okay. Next PD between B and C. BC कितना आ जाएगा? E2 minus I R2. तो डायरेक्ट बनाने के लिए BB minus BC तो क्या है? E2 minus I R2. This is equation 2. BBC. Now PD between two terminal of the combination. PD between two terminal of combination. PD between two terminal of the combination के भी AC BA minus BC. हेलो सर ये क्या है? नाउ क्या है? VA क्या है? VA minus VB plus VB minus BC. तो VB कैंसिल है, VA माइनस VB कैंसिल, VA माइनस BC. ओके. तो VAC कितना आ जाएगा यहाँ? तो E1 माइनस I R1 प्लस E2 माइनस I R2. सिंपल कंटेंट होती है, कैरी करो बोर्ड रे आसे समटाइम्स. तो E1 प्लस E2 तो माइनस कॉमन है R1 प्लस R2. So this is the equation 1, 2 and 3. This is the equation 3. Potential difference between two terminal of the combination. PD between two terminal of the combination. ठीक है, इतना है PD between two terminal of the combination. So now, if this combination is replaced by a single cell, this combination is replaced by a single cell having EMF क्या है? E equivalent and internal resistance are equivalent.
टोटल कॉम्बिनेशन रिप्लेस कला एंड सिंगल सेल जोगाड़ करी लगा हला तो सेठी करंट ड्रॉ कर तो एठी पीडी बिटवीन एसी केता सेकंड फिगर रे पीडी बिटवीन एसी ए एंड सी सेकंड फिगर रे भी एसी बेटा केदा आसीबो भी एसी ले ई बा लिख परिबेंडी भी ए माइनस सॉरी भी ए माइनस बीसी तो भी एसी क्या है ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट दिस इज इक्वेशन 4 the content is two cells e1 e2 of the combination replaced by a single cell then second figure the pd between a and c is this so now comparing this equation with this equation so comparing from 1 and 3 and 4 equation 3 and equation 4 from equation 3 and 4 क्या आ जाएगा E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या है R1 प्लस R2 ओके भाई आ गया कॉम्बिनेशन रिजल्ट आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स हैविंग डिफरेंट EMF ओके भाई आ गया तो नाउ सम पॉइंट्स ओके सम पॉइंट्स क्या है तो E इक्विवेलेंट E1 E2 R इक्विवेलेंट R1 R2 the first point is if n number of cells having different EMF and different internal resistance तो क्या आ जाएगा E इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा E1 plus E2 plus E3 हेलो प्लस डॉट डॉट En एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा E इक्विवेलेंस क्या है R1 plus R2 plus R3 plus डॉट 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 क्या है Rn if there is a great problem भाई एमडी कॉम्बिनेशन अछि सेकंड एंड रे फर्स्ट एंड लागिची सेकंड एंड रे फर्स्ट लागी एट को हेला कहानी बदली गला एटी को होला पुनी कहानी बदली जाउते ए फर्स्ट एंड रे पुनी फर्स्ट एंड लाग सेकंड एंड रे और फर्स्ट एंड लागिला ने चेंज हे गला तो E1 अछि दिस इज E2 अछि दिस इज E3 एटा E3 अछि ए जगह अछि इन दिस सिचुएशन में का आसीबो E इक्विवेलेंट केता आसीबो E1 plus E2 minus E3 उल्टा अछि ता रिवर्स अछि नेगेटिव रे नेगेटिव लागि जाय बैटरी रो आसीबो ठीक अछि न्यूमेरिकल रे आसी दिबो ग्रेटर रु स्मॉल टू माइनस करतबो E2 and C1 वन दिए बेटा ओके नाउ the combination of cell in parallel the combination of cell in parallel let two cells having EMF E1 and E2 internal resistance I1 and R1 and R2 connected in parallel okay so in this case parallel combination में potential same and current are different suppose I current drawn from E1 and I2 current I1 current this I1 current drawn from E1 and I2 current drawn from E2 and total current is I now the total current I equal to I1 plus I2 this is the great equation सेठी V potential difference R plus the current add होची तो फर्स्ट सेल नु एटी I1 करंट ड्रॉ कर देउची एटू I2 करंट ड्रॉ कर देउची तो टोटल करंट I इक्वल टू I1 plus I2 तो नाउ तो इन दिस combination parallel combination potential difference between two cell is same E1 the PD between E1 PD between E1 equal to PD this PD is same so two of potential difference same so this potential difference V is V B1 minus V B2 this is constant for two cell potential difference between this point and this point V B1 minus V B2 same for two cell
This is same for two cell, for two cell. Okay. So now for cell 1, for cell E1, the V equal to this VB1, V1 means V लिख दो जी, VB1 माइनस V B2 for cell 1 by, तो V इक्वल टू क्या होता है यहाँ, V इक्वल टू आसिव E1 माइनस I1 R1. ओके, दिस इज द V. तो ए थ्रू आमे I1 को सब्जेक्ट कर परिबा, एपट पळेला I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस V. तो I1 क्या है, E1 माइनस V बाय R1. ओके, I1 आसीगला फॉर सेल E2. This exact concept का potential difference is same. This the combination is parallel. तो V क्या होगा, V B1 माइनस V B2. तो V क्या है, B1 इंटू E2. ड्रॉप लगाते हैं I2 R2 एपट ऐसा I2 R2 इक्वल टू E2 माइनस V. तो दिस इज I2 इक्वल टू E2 माइनस V बाय R2. This is current drawn from the second cell, current drawn from the first cell. The current is variable. तो एटी पुट कर दबा I इक्वल टू I1 E1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 माइनस V बाय R2. इफ इंटीग्रल कर दो जी E1 बाय R1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 by R2 माइनस V by R2. तो बेटा I इक्वल टू E1 by R1 प्लस E2 by R2 माइनस कॉमन वाला V माइनस V कॉमन पड़े इसलिए दिस इज 1 by R1 प्लस 1 by R2. ओके भाई, तो नाउ एक कंटेंट को एपट उड़े आसी V 1 by R1 प्लस 1 by R2. Now E1 by R1 plus E2 by R2 minus I. Now LCM taken R1 R2 R2 plus R1 plus R2 लिख परिबा. तो एटी LCM देले R1 R2 by E1 R2 plus E2 R1 minus I. स्पीड होम तो ओके ठीक अछि. तो V की सब्जेक्ट करिबा. नाउ V की ए लिखुची V के समय V के आसीबो, तो V इक्वल 8 उटा आसी सब डिवाइड हो. तो केता हो E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 R2 डायरेक्ट इंटीग्रल कर दोउची R1 R2 बाय एटा कहली R1 प्लस R2. I एठी डिवाइड ले वोल्टेज देली R1 R2 बाय R1 प्लस R2. ओके, तो नाउ दिस इज कैंसल. तो V इक्वल टू एटा आसीला E1 R2 रिवर्स आछि प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 बाय R1 प्लस R2. दिस इज इक्वेशन 182. तो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल हो जे दिस फॉर्मूला आस्ता. एबे कोन करिबा ना ए जो दिस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस करिबा बाय सिंगल सेल. दिस कॉम्बिनेशन रिप्लेस बाय ए सिंगल सेल रिप्लेस कले दिस फिगर पळे आसला एठी. तो नाउ पीडी बिटवीन केता आसीबो, पीडी केता आसीबो एठी, बी केता आसीबो, पोटेंशियल डिफरेंस केता आसीबो ना E इक्विवेलेंस माइनस I R इक्विवेलेंस. दिस इज 2 दिस 3. दिस टोटली ए जो कॉम्बिनेशन दा रिप्लेस करा जाउची ए सिंगल सेल रिप्लेस कराला. तो एबे पोटेंशियल डिफरेंस आपण केता V इक्वल टू E इक्विवेलेंस माइनस I इक्विवेलेंस आसीगला. तो एबे 3 आउ 4 2 को कंपेयर करतबा. 3 आउ 2 को कंपेयर करिबा. देखिए स्पीड होले. अच्छा, तो कहते फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस केता आसी जाउची देखो एठी E1 R1 इक्विवेलेंट
EMF E1 R2 E2 R1 by R1 plus R2. First is, and the internal resistance is R1 R2 by R1 plus R2. Okay, this is the concept. Note this point. Then যদি থ্রি টু ঠাରୁ ଅଧିକା আসে ଦୁଇ ତିନିଟା আসে parallel not possible using this process. Kirchhoff's law ରେ ସେଟା ହବ. क्वेश्चन भी आसी करेबी ଦୁଇ ତିନିଟା ଇ डिफरेंट EMF ର ଯଦି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ସେଲ୍ ଆସିବ କହିବ ତାକୁ କମ୍ବାଇନ୍ କରନ୍ତୁ parallel ରେ तो तार ए प्रोसेस रे हेई परिबन सेटा ता पई Kirchhoff's law यूज हबो. ओके, तो नाउ the result is three result. There is three results. First one is E equivalence by R equivalence equal to U1 by R1 E2 by R2 plus up to En by Rn आसी जीवो आउ 1 by R equivalent केता हो दीटा एनो सॉरी ए बेरन सेमटी 1 by R1 plus 1 by केते R2. This all about the parallel combination. Next जीवा कंटेंट क्वेश्चन जीवा. ओके, जय जगन्नाथ.